Welcome, dear candidates. Aniket, Ankush, Arnav. Welcome all of you in my class. Come on fast, join the sessions. Is video and voice is clear? Yes, sir. Okay. What's your name, Aharsh or Aniket? Ankush, Arnav, welcome. Come on fast, join. In this session today, we are cover the month August and September. Major topic related to UPSC CSC, which is too much important for your PT exam. Come on fast, join the session. Okay, let's start. Current affairs session, especially target UPSC CSC 2023. This session is especially cover the previous 6 month major topics related to your PT exams. Okay, or also guide you to cover different sector like bilateral deal, like agreement, like any innovations, like any financial related decisions or any different sector which is important for you for your upcoming exam. We discuss in this class. So let's start from our first slide. We show the 18th meeting of the Persistence Organic Pollutant Review Committee. In short, we say POPRC. POPRC. It means Persistence Organic Pollutant Review Committee to the Stockholm Convention, POPRC, to 18, especially known as 18. This is the 18th meeting in Stockholm Convention, mainly target for harmful substances, and give the review or take the decision to ban or regarding the substances in this 18th summit, which is held on 26th of September 2022 in the headquarters of FAO, Food and Agriculture Organization. This one is the 18th summit. What is POPRC? Let me know what is POPRC. POPRC is a review committee, especially main reason to head of this 18th meeting is review on 5 to 7 substances and take decision regarding ban or continue to use of these substances in global form. Let's see in next slide. POPRC especially 31 member committee. Total number of member in this committee is 30. Total number of member in this committee is 31. POPRC. Those 31 member or experts established to task reviewing proposal for which submitted by the party to list a new substances under the Stockholm Convention. New substances like regarding which is harmful for human, which is harmful for environment, which is harmful for future of the earth. This committee especially covered 8 government designated experts from Africa under this committee. The team member from 8 members from Africa, 8 members from Asia and Pacific region, 3 members from Central and Eastern Europe, and 5 members from Latin America and the Caribbean. Latin America and Caribbean nearby, you know also about Bermuda, you know also about West Indies. 7 from Western European and other states. From this 31 member of POPRC, 8 members from Africa, 8 members Asia Pacific region, 3 members from Central and Eastern Europe, 5 members from Latin America and Caribbean, and 7 from Western European and other states. To review on the problems related to environment or different substances which affected the global warming, which is the main causes of harm or create global warming, or
take a decision or review on those type of substances. Please tell me about which kind of substances is harmful for our environment. Any single, please tell me. Aniket, Harsh, please tell me any single substances. For example, Chlorofluorocarbon. you know about CFC, right? CFC, especially from AC, released from AC and from refrigerator, CFC, chlorofluorocarbon, right? But in this class, POPRC meeting, review the given 7 substances, especially targeted dachlorine plus and a flame retardant and UV328. What is UV328 and dachlorine plus? Mainly 2 chemicals were recommended for listing under the Stockholm Convention, and also in the 18th meeting, also review the extra 5 substances, which we discuss in next slide. But main reason of 18th summit in Stockholm of POPRC recommended the 2 substances, and on these 2 substances taking decision to totally ban use of these substances, especially in case of fertilizer, agriculture section, especially in case of making polythene, rubber, or so many different sectors. India already opposed against the POPRC reviews. The 18th meeting of the Persistence Organic Review Committee at the Stockholm Convention especially included 5 more substances. 5 more substances in its agenda, but especially dachlorine plus and UV328 is the main 2 substances. That's why the review committee given the decision to ban these 2 substances for future, which is too much affected our environment, global form, our ozone, or different things. But mainly these substances used as a pesticides or a flame. The listed chemical included the pesticide in form of pesticides, a flame retardant, and some plastic stabilization substances, like in case of polythene, like in case of rubber, etc. Listed chemicals are those especially chlorofluorous, chlorinated paraffin, number 1, long chain perfluorocarboxylic acids, dachlorine plus, which is talking about in first paragraph, and a flame retardant, and UV328. But mainly India opposed to ban on these 2 substances, especially dachlorine plus and UV328, because in major form in India and China, these 2 substances used in wait. Different sector like major form of agriculture, in form of fertilizers, in form of pesticides, or in form of in case of production of rubber or different things. That's why China and India opposed to ban of these 2 substances, dachlorine plus and a flame retardant as a flame retardant and UV328. But in Stockholm Convention, just a minute, after a month. In Stockholm Convention, POPRC finally take decision to ban totally these 2 substances, and also given the review for upcoming meeting on these 5 substances for regarding environment protection, especially chlorofluorous chlorinated paraffin, long chain perfluorocarboxylic acid. These 2 substances especially too much harmful for human health, especially kids' growth, especially for kids. These 2 substances too much harmful if we use these substances in our food, just like a agriculture sector in form of pesticides or other. That's why Stockholm Convention, which is fully work on human health, especially targeted the kids' health, ban those types of substances which is too much harmful for environment
or human being. So please, Stockholm Convention held in where? Held in headquarter of FAO in September month. Headquarter of FAO in September month. FAO is the United Nations and work under the United Nations, which will form its food and agriculture organizations. And the headquarter of FAO located in Rome. This convention is held between 26 September to 30 of September. This is the 18th meeting for reviewing on especially two substances and take a upcoming decision on the agenda on behalf of 5 substances more. Total 7 substances targeted by POPRC committee. In case of using in types of pesticides or agriculture sector or different production of different industrial sector, especially in case of gum, in case of tire company, in case of different fertilizers company, etc. Stack of conventions. After the stack of convention, just see the next slide. National Adaptation Month. Any student in this class, please tell me, which month is also known as National Adaptation Month? Your example, your option is January, your option is September, your option is August, your option is November. Which month is also known as National Adaptation Month? Please tell me. Your option is January, September, August, and November. Please don't use Google. Which month is also known as National Adaptation Month? Anyone in this class? Arnav, Ayush? Come on fast. National Adaptation Month. Am I audible? Ayush? Yes, sir. Okay. Have any idea? No, sir. Okay. National Adaptation Month, especially November, called as National Adaptation Month. As per Adaptation Month, November month, due to 9th of November is also known as 9th of November is also known as Global Adaptation Day. Adaptation Day, 9th of November is also known as Global Adaptation Day. 9th of November is also known as Global Adaptation Day. That's why Indian government decided to November month as a National Adaptation Month. As a National Adaptation Month. There is a specific word related to adaptations known as CARA. You know about CARA? What is CARA? In the news currently, CARA, Central Adaptation Resources Authority. In short, we say CARA. What is CARA? CARA is an authority and it is an autonomous body under the Ministry of Women and Child Development. Under the Ministry of Women and Child Development, Government of India, and responsible for both in-country and inter-country adaptation in India. In-country and inter-country adaptation in India. कारा के बनने के बाद ये डिसाइड हुआ कि एडेप्टेशन जब तक कि कारा के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक कि उस एडेप्टेशन को लीगल नहीं माना जाएगा. कारा इज एन ऑटोनोमस बॉडी वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट fully responsible in India is responsible for both in-country and inter-country adaptation in India. After 2008, there is the rulings of Supreme Court in case of West Bengal. That's adaptation of girl. No Indian child is given for inter-country adaptation without him or her having been considered by Indian families residing in India. This autonomous body, also this is known as Central Adaptation Resources Authority, especially after the decision of Supreme Court, it takes
power and decided it firstly ensured that no Indian child is given for inter-country adoption without him or her having considered by Indian family residing in India, or no any girl, especially अंडर 14 नो एनी गर्ल, किसी भी 14 साल से कम एज का अंडर 14 गर्ल को किसी भी मेल गार्जियन को और फादर को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. नो एनी गर्ल अडॉप्ट बाय एनी मेल और एनी फादर, स्पेशली मेल और फादर कॉमन वर्ड है, स्पेशली मेल वर्ड यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ फादर इज नॉट ओनली द सिंगल पर्सन टू अडॉप्ट दैट गर्ल और एनी अदर पर्सन. गर्ल्स को सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये रूलिंग्स है. दैट्स वाई कि गर्ल्स के केस में गर्ल्स को ऑलवेज किसको प्रोवाइड किया जाएगा? मदर को. यू हैव आल्सो सी द एग्जांपल ऑफ फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर. करिश्मा कपूर's case, especially the kids hand over to Karishma as per the Supreme Court ruling 2016. It also provide financial assistance. It also provide financial assistance to various NGOs, governments, run homes to promote quality, to promote. This line is too much important for multi-statement based question. That's why today our class maximum based on theory. Our today current affair class maximum theory based because of this type of current affair topics, especially when we discuss about National Adaptation Month or Global Adaptation Day in 9th of November. The word Kara is too much important for you. What the work of Kara, what the rights of Kara, and how Kara works in India under the Ministry of Women and Child Development. This is too much important for you. As a multi-statement based questions, it also provides financial assistance in various NGOs, to various NGOs. Doesn't matter, NGO name doesn't matter. Government run home to produce. Reason, what's the reason? To provide financial assistance to promote quality of child care to such as children and place them in domestic adaptation. So in this paragraph, 2 lines is too much important for you for your upcoming PT exam as a multi-statement based question. Kara provides financial assistance to various NGOs. Why? To promote quality and child care to such children and place them in domestic adaptation. There is also the just such type of various NGOs in like Being Human. Being Human is also work under the Salman Khan or under the rules and regulation of Kara. In India, no one can adopt any single child without information or research in Kara, which work under the Ministry of WCD, Women's and Child Development. So this slide is too much important for you as a multi-statement based questions, or you take this content from management sections from in form of PDF or PPT also. Don't forget. Next slide about some related act for something related to Kara. For example, timeline of adaptation of laws in India. Please take a Hindu Adaptations and Maintenance Act, which is active in 1956. Main object, main point, come to the main point. Main objective, to find children for childless couple. To find children for childless couple. For childless couple. This is the main object of Hindu Adaptation and Maintenance Act, which is introduced in 1956. The main objective is to find children जिनके कोई भी बेबी नहीं होता, उनके लिए बेबी अडॉप्ट कराने के लिए. In 1956, Hindu Adaptation and Maintenance Act आया. In short, it is also known as HAMA. HAMA, related to Hindu religion to find children for childless couple and allow only Hindu, Sikhs, Buddhist and Jains to adopt. Hindu, Buddhist, Sikhs and Jains to adopt. 1956, HAMA, HAMA, HAMA
The main objective is to find children for childless couple and for special region of only for Hindu, Sikhs, Buddhists, and Jain to adopt different religion child in 1956. In 2000, the Juvenile Justice Act facilitated for what? Facilitated for what? Rehabilitations of amendment, orphan and abused children in formal institutions. Rehabilitations of amendment of orphaned and abused children in formal institutions in 2000. But this is too much, not important for you. HEMA, focus on HEMA. Second thing, focus on Juvenile Act 2006 and focus on 2015. These three acts, according to my opinion, is too much important for your upcoming PT exam. What is in 2006? The Juvenile Act Justice Amendment. Why this act is important for you? As a GS section, as a current affair, multi-statement based questions. Why? Because in this act, the more concentration on child rights, the more concentration of child rights and extended adoption of single parents. This is too much important line for you. In 2006, Juvenile Justice Act Amendment, under the Juvenile Justice Act Amendment, extended adoption of single parents. Just like कोई सिर्फ एक वाइफ है या कोई सिर्फ एक हस्बैंड है, इट मींस कोई एक फादर ही है या ओनली सिर्फ एक मदर है, तो सिंगल पेरेंट्स अडॉप्टेशन राइट्स को जो अमेंड किया गया इन 2006. This is related to CARA. This is related to National Amendment Month. This is related to Global Amendment Day. In 2006, Juvenile Justice Act amended that adoption to single parents or adoption process become clearer. This line is too much not important for you, but हाँ, single parents वाला statement में भी आपको upcoming PT exam के लिए देखा जा सकता है. Especially adoption. Why this topic is too much important for you? Why for a PT exam? In अभी little bit आपने देखा होगा case of Rohingya और case of CAA NRC in between from 2017, 18 about or 16 about, ये सारे issues जो start हुए. That's why current affair में at present previous November month का important topic जो मेरे सामने feed हुआ CARA is too much important for you. This word is too much important for you, especially in current affair, UPSC, CSE. Focus on glossary based topic in current affairs section. That's why today I discuss about CARA and some important acts which supports CARA. In 2015, the Juvenile Justice Act terminology changes the lawful parents, and 2015, just see 2015, Central Adoption Resources Authority, CARA, became a statutory body. This is related to CARA. When CARA being worked as a autonomous body in 2015 Juvenile Justice Act, CARA became a statutory body. From 2015, CARA became a statutory body. So what is CARA? What's the work of CARA? What's the main object of HAMA, HAMA? To adoption childless couple, children for childless couple in 2006, extended adoption to single parents in 2015. CARA became a autonomous body. CARA became a statutory body. CARA became a statutory body under the CARA Act, especially under the Ministry of Development of Women and Child. In 2017, adoption regulations laws adopted within the country and overseas also added the clarity of procedures, requirements, and involved body. Procedures, requirement, and involved body. In this slide, only three lines, too much important for your upcoming PT exam. First one, 1956, adoption facility for childless couple. Second one, 2006, extended adoption to single parents. Third one, 2015, CARA became work as a statutory body. These three lines too much important for you. Don't forget this, related to a National Adoption Month, November.
Just see, any question from this slide, dear students? Any question or query from these slides related to 1956 or CARA? Any question or query from this slide? First, any question, any query? Sir, can you explain the 2015 one, the Juvenile Justice Act? Okay, 2015. In 2015, government makes a specially act for related to CARA, and terminology changes to lawful parent. Especially terminology changes to lawful parents. Why? In 2015, there are too much example at like in police department experience, different police cases. Just a minute. Okay. What's her good name? Pragya. What's her good name? Sir, Kaushiki. Kaushiki. Near to 2015, near 2014, near 2016, there are so many cases. Forces government to make some amendment in CARA, make some amendment in adaptations cases in India. Nearby 2015, terminology changes to lawful parents. Lawful parents means rights. There are some changes in rights of father, adoption cases, rights to changes of mother for any case, a child. So especially in case of girl, Supreme Court's under the rulings 2015 case, I think this case from Bengal rulings, Bengal case, Sanjay Malhotra something name. In this case, Supreme Court take a decision that no any father have a right to adopt any single girl under the age of 14, under 14 years age. Or from the 2015, this is major case, major rulings which help in also related to the case of Karishma Kapoor case, famous actress in Bollywood. The adaptations of girl side or lawful cases which is in favor, always in favor of women on behalf of different cases at present near 2015, single male is barred from adopting a girl. From second line, single male is barred from adopting a girl child. Clearly, Supreme Court take a decision against the single male, and I think this is good for the growth and progress or for any girls because of in India हम कह सकते हैं एक माँ एक लड़की की बेहतर परवरिश कर सकती है in comparison of father. This one is my feedback according to my experience of police department or so many different cases. ये मैंने देखा. That's why single male is barred from adopting a single age of under 14 years or nearby 2019 the age of 14 years इसको भी खत्म कर दिया गया है. फादर अलाउ नहीं है कि वो गर्ल्स को अडॉप्ट करे. सिंपल सा डायरेक्ट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर हुआ है. नेक्स्ट थिंग, ऑल द सॉरी थोड़ा सा रब करते हैं इसको. ऑल मैकेनिज्म, प्रोसेसेस एंड अथॉरिटीज बिकम क्लियर. दिस लाइन्स इज टू मच कॉमन. ये हमेशा इन केस ऑफ एडॉप्टेशन, इन केस ऑफ एनी अपकमिंग रूलिंग, ये लाइन हमेशा साथ में ऐड रहता है. बिकम क्लियर. दिस इज द मेन मोटिव ऑफ अमेंडमेंट. This one is the main motive of any amendment related to this act or our constitutions, that all mechanism, procedure and authority become clear. But in this 2015 Juvenile Justice Act, this line is too much important for you. CARA became a statutory body and no single male is barred, single male is barred from adopting a girl child in 2015. Okay, Kaushik, or any questions? No, Sir. Okay. Hello, sir. Yes, yes. Sir, Juvenile Justice Act, when it was started, sir? It was started from 19, especially Juvenile Justice Act is not only the process from Indian government, it also work under the British government also. You know about Okay. you know about our IPC 1860, IPC Indian Penal Code 1860 में आईपीसी स्पेशली हमारा जो बना है, इंडियन पैनल कोड बना है स्पेशली एट प्रेजेंट 1860 में. इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट था 1860?
work under British government, BEIC, British government, 1860 IPC, CRPC, so many different act, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंटिन्यू हम करते चले आ रहे हैं, कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, स्पेशली बीइंग एक्स पुलिसमैन कह सकता हूं मैं, बीइंग एक्स पुलिसमैन, सो मैनी पावर्स, कई ऐसी पावर्स हैं जिससे अगर हम प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर भी हम फॉलो करें तो बहुत टफ हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट को जॉब करने के लिए, बिकॉज इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट और फॉर डिफरेंट स्टेट जस्ट लाइक यूपी, दिल्ली, वर्क अंडर आईपीसी 1860. 1860 मीन्स सिंगल वर्ड, अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश रूलिंग्स. ठीक है. व्हाट्स योर गुड नेम? Sir, Ayush. आयुष. Yes, sir. एक एक्ट को हम आपको एक एक्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करके आपको हम बताते हैं एग्जांपल. यू नो अबाउट शादियों में जो वो चलता है जिसमें दूल्हा बैठता है, घोड़े होते हैं आगे, उसे क्या कहते हैं? जो घोड़े होते हैं शादियों में चलता है, रथ. Rath. Chariot. हाँ, चैरियट, राइट, चैरियट. श्री कृष्ण गीता में सीन में जो आपने देखा है, उसमें जो इन फ्रंट जो उस रथ को एज ए श्री कृष्ण उस रथ को जो चला रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कंप्लीटली देख रहा है हॉर्सेस को, वो उसको सिंगल टाइम अगर हिट करता है उसको आगे पुश करने के लिए कि मैं आगे बढ़, तो एज पर आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1816 3000 रुपीज का चालान है. 3000 रुपीज. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी भी इस तरह से विलेज एरिया, रूरल एरिया में अगर हम उसके ऊपर चार्ज करेंगे तो सोचिए क्या सीन होगा अगर आईपीसी टोटली फॉलो कर दी जाए तो. 3000 रुपीज का उसके ऊपर फाइन है, स्पेशली एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत. बट वो बहुत टफ हो जाता है, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम रन नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई ये जो मेजर पार्ट्स हैं, स्पेशली 1956 कारा, और जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो हो सकते हैं, ऑलवेज वही आपके क्वेश्चन बनते हैं. जो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना आज भी टफ है, स्पेशली 1860 कंप्लीटली आईपीसी फॉलो नहीं हो सकता. कंप्लीटली आईपीसी फॉलो करना बहुत टफ है, दैट्स इम्पॉसिबल. अब तो पब्लिक भी बहुत एजुकेटेड हो रहा है. दैट्स व्हाई यू फोकस जस्ट ओनली दोज थिंग्स जो इजीली प्रैक्टिकली फॉलो की जा सके और स्टेटमेंट बेस्ड इंपॉर्टेंट रह सके. ओके, जस्ट कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Talking about UNICEF activity. This one. UNICEF, especially for every child. Whenever we talk about UNICEF, हमेशा mindset रखिए, UNICEF which always work for children. UNICEF along with United Nations Population Fund, UNPF, along with UNPF launched a global program. Why? To tackle children marriage in 12 of the most high prevalences or burden countries, especially इसको हम प्राउड तो फील नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम में इंडिया भी आता है. This is the example of those countries: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen, and Zambia. These 12 countries, these countries especially, this is major issue of child marriage in 12 of most high prevalences of high burden countries. हम अपनी इंडिया में तो इसके बेसिस पर एक वो नाटक आता था, बालिका वधू. You heard about Balika Vadhu. So UNICEF along with UNPF launched a global program. A global program for what? To tackle child marriage. Which was major issue in this country, especially India, Bangladesh, especially Nigeria, especially in Uganda, especially in Ethiopia. There is also a special law in Eritrea. Eritrea is a country, African country. Eritrea is an African country, and the currency of Eritrea is NAKFA. NAKFA. Currency of Eritrea is NAKFA, and this is compulsory in Eritrea.
एरिथेरिया का मैरिज को लेके कंपलसरी है कि फॉर एनी मैन मिनिमम 2 टाइम्स उसे मैरिज करना है कंट्री के अंदर, अजीब एक्ट है। तो यूनिसेफ फोकस स्पेशली फोकस जो कर रहा है, स्पेशली मैक्सिमम कंट्री इन दिस बल्क इज फ्रॉम अफ्रीका, स्पेशली घाना इज फ्रॉम अफ्रीका, युगांडा फ्रॉम अफ्रीका, यमन फ्रॉम अफ्रीका, जाम्बिया फ्रॉम अफ्रीका, नाइजर फ्रॉम अफ्रीका, next one Sierra Leone. So maximum countries from Mozambique, especially from nearby Africa, Mozambique, nearby Madagascar in nearby South Africa, Mozambique. Maximum country, especially from Africa, United Nations, UNICEF work with UNPF to tackle the child marriage problem. Progress on SDG. The full form of SDG is Sustainable Development Growth. Full form of SDG, Sustainable Development Growth. Progress on SDG 5.3, eliminating child marriage. This one is a target, SDG 5.3. SDG target number 1, no poverty. SDG target number 2, zero hunger, which we discuss on next slide. So for target 5.3 is eliminating child marriage. This one is the target, eliminating child marriage is dependent on progress, which also affected the mind, and dependent on progress in other areas, especially education, especially employment, especially poverty reductions. Yes, child marriage also affected the education for women, especially women, or employment or poverty. That's why this is the major reason of gender gap or gender index. That's why different countries government makes gender-based budget. Gender-based budgets you see in backside of auto, beti bachao, beti padhao, or so many different Kanya Vidya Dhan, so many government policies run in India presently. The global target is to eliminate child marriage practices by 2030. But I think according to Nepal, according to Niger, this child marriage major issue in Niger. 2030 is the year targeted to eliminate completely. It means to eliminate child marriage from 2030. Today is 2023. Only 7 years. 7 years is not sufficient time. As per my opinion, 7 years, the education, especially child marriage, is the issue of education, literacy or illiteracy. Is the major difference between literacy and illiteracy. Especially in India also, Rajasthan. Rajasthan is a perfect example. So many villages. आज भी कई ऐसे villages हैं जहाँ पे child marriage एक tradition है, just like tradition. और government especially work with help of UNICEF. Along with UNICEF, Indian government also work to eliminate the cases of child marriage, which help to make a growth in women section, especially in case of education, in case of employment or poverty or other so many major problems in country related to gender based, related to social issues or etc. Incidences of child marriage was the highest in West and Central Africa. West Africa, Niger is the country of West Africa. Niger, nearby Nigeria, in below from Nigeria, this is one is Togo, Benin, Ghana, Niger, Nigeria. This one is the West African country and Central African country, where nearly 4 in 10 women were married of before 18 years of age. This one is the perfect example of illiteracy. 4 out of 10 married under the 18 years of age, or age approximate 8 year, 9 year, 10 year, 12 year, 13 year maximum. In geographic channel, ये major problem आप maximum geographic channel में देख सकते हैं. That's why UNICEF along with UNPF work a global program to tackle a child marriage, especially Bangladesh to Zambia. This country is affected. इस देशों में tradition, especially those economy which affected from tradition economy. Tradition economy is the perfect example of social economy. So many African country, जो just like Ethiopia, just like Kenya, just like
Congo, just like a Botswana, just like a Zambia, just like a Togo, Benin, so many countries जहां आज भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी देखने को मिलता है. टुडे इफेक्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला है. यू सी वंस एग्जांपल द पापुआ न्यू गिनी प्रेसिडेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनी joined the United Nations meeting in our tradition wearing just like a hat which is made up of bamboo and single cloth. यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ट्रेडिशन वेयरिंग जो उनकी है उसी में ही वो ज्वाइन करने पहुंच गए मीटिंग. पापुआ न्यू गिनी, प्रेसिडेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनी. ट्रेडिशन इकोनॉमी मेनली एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर मेंटल ग्रोथ, फॉर जेंडर, टू मिनिमाइज जेंडर बेस्ड डिफरेंस. ट्रेडिशन इकोनॉमी का इफेक्ट बहुत है, और स्पेशली दिस कंट्रीज. इंडिया इज नॉट अ मेजर इशू, बट ड्यू टू पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन है वहां प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम है. मोजाम्बिक, related Mozambique from Central Africa, Burkina Faso from Western Africa, Ghana, Western Africa. These countries UNICEF especially work on along with UNPF. Okay, next we see SDG target. Please focus. Today our class maximum theory based class, because of आज स्पेशली टारगेट हम कर रहे हैं पीटी में जो करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक्स के साथ मिक्स होकर के मल्टी स्टेटमेंट्स बन के आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड बन के आते हैं. हम उन क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं. व्हाट द मेन गोल्स ऑफ एसडीजी? दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. एसडीजी टारगेट नंबर 1, नो पॉवर्टी. टारगेट नंबर 1, नो पॉवर्टी. From the last borderline is 2025. No poverty. How can it possible? In India, officially government accepted that 61 CR people comes under BPL, below poverty line. 61 CR. Our total population is approximate 1.40. 61 CR, approximate 40 to 45% populations comes under BPL, below poverty line. How can it possible to achieve the target of no poverty at the border year 2025? संभव ही नहीं है, impossible. That's why government started different scheme, just like Agniveer in defense section, work only for 4 years. After that 11 or 12 lakh something rupees, just like a retirement, just like a ex-serviceman, provide किया जाएगा आपको. इस रश को, इस 61 CR को कम करने के लिए, मिनिमाइज कम करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सटेंसेस फॉर different kinds of startup with the help of NABARD, with the help of RBI, with the help of IDBI, with the help of SIDBI, a small industrial development bank of India. Directly, indirectly, financial substances provided by government to a small startup, just like a small and cottage industries, just like a carpet production, just like a different types of productions, to minimize the target, to minimize the number of 61 CR to no poverty. But I think this is impossible. या संभव है कि नो पॉवर्टी का टारगेट हम अचीव कर सकें. सेकेंड टारगेट of SDG is zero hunger. Second target of SDG is zero hunger. Anyone in my class know what the present World Hunger Index rank of India? World Hunger Index rank of India. Anyone in my class? World Hunger Index rank of India. More than 100? More than 100. Easily. World Hunger Index, World Happiness Index, Human Development Index, more than 100. Approximate 108 is my last updation. 108 rank of India in World Hunger Index. Then how can we achieve zero hunger target? Our rank is 108 at present. This one is my last updation. 108 rank of World Hunger Index. Then how can we achieve zero hunger targets? I think this is impossible for India. Good health and well-being. Good health and well-being, just like good health is also affected from clean water and sanitation. Good health and well-being also
affected from gender equality, good health and well-being. Well-being word is also affected from quality education. Quality education is the fourth target, gender equality fifth target, clean water and sanitation is sixth target of SDG. Next, affordable and clean energy. That's why government moved to solar-based energy. That's why government moved to electric cars or electric vehicles, solar-based different in Tamil Nadu. एक बहुत बड़ा सोलर ग्रिड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, बनाया है, एस्टेब्लिश किया है. Decent work and economic growth, industrial innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communication. 5G is the perfect example. Responsible consumption and production. In India, maximum consumer. आप मैं सभी इंडियन का जो कंज्यूमर है वो एट प्रेजेंट कंज्यूमेबल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है. जस्ट लाइक ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड मोबाइल, क्लोथ्स, शूज, जस्ट लाइक फूड ग्रेन्स. जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उधर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, नॉट इन केस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ. दैट्स व्हाई डिफरेंट कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. Different mobile companies, different goggle companies, different watch companies, different shoes companies, because of the consumer maximum ratio of consumer rush in India. वो busy है, engage है किसमें? Consumable goods में. Next one, climate action, life below water, talking about maritime, talking about fish or different species in the oceans. Life on land. Target number 14, below water, 15, on land, 16, peace, justice, and strong institutions, 17, partnership for the goal. Those are the 17 target of SDG. और इंडिया को मैक्सिमम बहुत चैलेंज है. हाउ कैन इट पॉसिबल? इंडिया के सामने चैलेंज है कई टारगेट पे कि कैसे पॉसिबल है इन टारगेट को अचीव कर सकें. अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग मुझे बताइए इसमें से कौन से टारगेट ऐसे हैं जिस पर आपको एक दो गवर्नमेंट पॉलिसी पता हो. प्लीज टेल मी. रनिंग में एक दो गवर्नमेंट पॉलिसी आप जिसके रिगार्डिंग बता सकते हैं. जस्ट सी. जेंडर quality education, about quality education, about gender equality, clean water and sanitation, especially Swachh Bharat Abhiyan. Good health and well-being. You know about Ayush scheme. Ayush scheme. Zero hunger. Nearby elections, अमित शाह के इलेक्शन मीटिंग में अमित शाह ने अनाउंस किया था 80 करोड़ पीपल को वो फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं इन मिनिमम प्राइस, स्पेशली व्हीट एंड राइस. 80 करोड़ पीपल को. नो पॉवर्टी. तो इस पर पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू मच हेल्पफुल फॉर दोज पीपल मेनली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई स्किल को इम्प्रूव करके स्किल को कन्वर्ट करें एम्प्लॉयमेंट में. जस्ट लाइक मुझे गिटार प्ले पसंद है, तो दैट्स व्हाई गिटार ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन फ्रॉम द डिफरेंट एनजीओस, और मेरा गिटार को प्ले करना ही मेरा प्रोफेशन बन जाए. दैट्स व्हाई मैं सेल्फ डिपेंड हूं और इससे मैं बाहर निकल सकूं नो पॉवर्टी से. तो दिस वन इज द मेन 17 टारगेट ऑफ एसडीजी. और गवर्नमेंट तो बहुत कंफ्यूज है, बहुत कमिटमेंट में है गवर्नमेंट, जिस पर इंटरनेशनल फॉर्म में, ग्लोबल फॉर्म में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना है, रिप्लाई करना है. और अपकमिंग बजट जो है स्पेशली इसी से फैक्टेड रहेगा, याद रखिएगा. जस्ट सी द नेक्स्ट स्लाइड. ग्लोबल वेज रिपोर्ट. ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023. Especially global wage report published by which organization? Global wage report published by ILO, International Labour Organization. First time global wage report published in the year 2008. First time in 2008, ILO, International Labour Organization, published the global wage report.
But just see what about 2022, 2023? What are the findings? Just see findings, especially summary of global wage report. Due to Corona, due to Ukraine-Russia war, आप इस चीज को फोकस कर रहे हैं इंटरनेशनल फॉर्म में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो डाउन हुआ है. इस चीज को आप फील करते होंगे. श्योर, मिडिल क्लास फैमिली इफेक्टेड, अर्निंग अप्रोक्सीमेट एज पर ग्लोबल वेज रिपोर्ट 0.9% समथिंग जो इनकम है मिडिल क्लास फैमिली का वो क्या हुआ है, कम हुआ है. जस्ट सी द फाइंडिंग ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट. First of all, we discuss about minimum wage. What is the minimum wage and what is the real wage? Minimum wage and real wage. Minimum wage is the lowest or minimum remunerations that a employer paid to his employees against the work performed given by term. That's called minimum wage. वो minimum wage, just like in Manrega scheme, 258 rupees per person in Uttar Pradesh, and different states, just like a minimum wage report as per Indian government, maximum wage provided by Karnataka, Kerala government, something 350 rupees per day fixed by Kerala government, and minimum is from Bihar and UP, approximate 240 or 230 rupees per day. So what is the minimum wage? A lowest or minimum remuneration that an employer just must pay to his employees, just like a, for example, allied IAS is an employer and me is an employees to work the perform for a given term, for a 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, according to term. Next, what is real wage? What is real wage? Real wage, especially in economy, there is a terms inflation. Inflation, what is inflation? Inflation, when the demand of any product increases, then the value also increases. That's why customers face high price situations. This is called inflation in economy. Real wages affected from inflation. Why? If the price of any goods and services increases, then your purchasing power of different goods and services क्या होगा? Decrease होगा. Real wages do not refer to the remunerations that you receive, but they calculated in terms of purchasing power, and your purchasing power mainly affected from the terms inflation, affected from the price of the goods, affected from the price of the goods and services, or in the society, the real wages will be on negative side, because if inflation increases, real wages will be on the negative side because of reduction of buying any product and services, or reduction on purchasing power of any individual or any society. The Global Wage Report 2023 factified that because of the inflation, postponed pandemic, COVID pandemic, there is a decrease in real wages. After COVID, you also realize, feel करते होंगे आप ये, after COVID आप ये feel करते होंगे, प्राइवेट सेक्टर और डिफरेंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज जहां पर 10 रुपीज आपका कंटिन्यू रियल वेजेस था, वहां पे वो डिफरेंट लेबर 8 रुपीज में वर्क करने को एग्री है, रेडी है. रियल वेजेस डिक्लाइन हुआ है फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल वेज रिपोर्ट. फर्स्ट टाइम, आज तक ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है. ग्लोबल वेज रिपोर्ट में जो रियल वेज है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है. 2008 से अब तक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डिक्रीज हुआ है समथिंग 0.9% डिक्रीज हुआ है. आज तक ऐसा नहीं हुआ. और ये क्यों? ड्यू टू पैंडेमिक इफेक्ट. पैंडेमिक कोविड-19 का इफेक्ट ग्लोबल फॉर्म में पड़ा था, सभी को देखने को मिला था ये. दिस वन इज द मेन रीजन कि वेव का इफेक्ट पड़ा है सभी के ऊपर, और मेंटली पीपल इस चीज को लेके प्रिपेयर है कि प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं. दैट्स व्हाई उनकी अगेंस्ट मेरा अर्निंग है. इफ माय अर्निंग इज 10 रुपीज, माय इनकम इज 10 रुपीज, एंड द प्राइस ऑफ मिल्क ऑफ 1 liter इज 5 रुपीज,
milk price 5 rupees. Due to inflation, price of milk hike in form of 7 rupees. So in comparison of 5 rupees to 7 rupees, आपका purchasing power, your purchasing power reduced in terms of real wages. This one is the terms of real wages. What's your income? 10 rupees. 10 rupees is your minimum wages fixed by different countries' government. Real wages in terms of purchasing power capacity, which is affected from inflation or different natural calamities, just like a post-pandemic, especially COVID. COVID is a major condition. Yeah. कोविड इज अ मेजर कंडीशन, दैट्स व्हाई बहुत मार्केट लेबर क्लास काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हुआ है, वेजेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, और एनी डिफरेंट एजुकेटेड नॉट ओनली फ्रॉम ब्लू कलर जॉब, आल्सो व्हाइट कलर जॉब पे भी इफेक्ट पड़ा है. यू नो अबाउट ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर ऑफिशियल जॉब एंड फील्ड जॉब. नेक्स्ट, this one is the major terms, minimum wages, real wages, affected from inflation, other things. But what's the main finding of global wage report? What's the main finding of global wage report? Just see. Finding of global wage report. What are the key findings of global wage report? Focus on important things. First one is, this is the first time there has been decline in monthly wages 0.9 in the real term. This statement too much important for you. First time decline in monthly wages 0.9% in real term. In real term means in terms of purchasing power, in terms of inflation, in terms of different types of natural calamities affected, or so many different reasons. First time, first half of 2022, there has been decline in monthly wages 0.9%. This is for the first time in 20th century. First time in 20th century, the real global wages experience declining growth. So this line is too much important for you for your upcoming PT exam. COVID-19 is the reason. Everyone know about COVID-19, doesn't matter, but this line is too much important in the finding of global wage report 2022-2023. Especially also, there is also another reason, Ukraine war and the worldwide energy crisis related to OPEC, crude oil, Russia OPEC impact. So real wages, the two reasons are resulting in a decline in real monthly wages in several countries. Which one? First one is inflation crisis, second one global economic slowdown. First one is inflation crisis, second one is global economic slowdown. This one is the two reasons. That's why in global form, several countries face declining in the condition of real wages. So what is real wages? Real wages which affected the purchasing power of any individual, which is affected from inflation or different kinds of crisis, especially inflation crisis or global economic slowdown, which one affected from COVID-19. That's why Global Wage Report 2023 के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 0.9% रियल वेज हमारा डाउन हुआ. प्लीज इस डिजिट को भूलिएगा मत, ये मेरा कमिटमेंट है. दिस वन इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये मेरा कमिटमेंट है, 90% मैं कमिटमेंट करता हूं. दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जाम, टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जाम 2023. ये 0.9% और डिफरेंट जुवेनाइल एक्ट में जो स्पेशली मेजर पॉइंट थे अंडर कारा, और जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया एसडीजी का रिपोर्ट, एसडीजी रिपोर्ट 17 टारगेट, स्पेशली मेजर टारगेट, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन हेल्थ, क्लीन वाटर एंड हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, दोज आर द मेन टॉपिक जो पीटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस लाइन फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला इन 21st century, that 0.9% declining of real wages is important for you. Other things just generally है, international form में है, as compared the baseline 208 because of global wage report first time जो था वो 208 के अकॉर्डिंग हमारा पब्लिश होता है. ओवरऑल wages 2022 year low in the real for countries like Italy, Mexico, Japan and United Kingdom.
ये लाइनें आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो स्टेटमेंट मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है वो आप फोकस कर सकते हैं। दिस वन एक हिंदी का एक वो दोहा है जिसे कहते हैं कि सार सार सब चुंग लिए, मतलब की चीज सेलेक्टेड कंटेंट उठाइए, ऑल के केस में मत जाइए, सेलेक्टेड कंटेंट आप कलेक्ट करिए जो स्टेटमेंट पे फोकस करे। दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। रियल वेजेस में माइंडसेट रखिएगा 0.9%। जस्ट सी नेक्स्ट स्लाइड। इन लास्ट में आपको एमसीक्यू कराऊंगा आज के कंप्लीट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट में एमसीक्यू सेशन भी है, 5 एमसीक्यू हैं आज के सेशन के ऊपर। Some basic one-line based important information for you. Who published the global wage report? Who published the global wage report? ILO. इस पर हमने डिस्कशन कर चुके हैं। ILO published the global wage report. Okay. What are the two function of ILO? What are the two function of ILO? First one is increase social justice, recognizing human and labor rights. Second one is work towards with collective prosperity and peace. This one is the two major function of ILO. Two major function of ILO: increase social justice, recognizing human and labor rights, and second one is work toward collective prosperity and peace. बट मेजर स्पेशली आईएलओ वर्क करता है डिफरेंट लेबर क्लास जो सोसाइटी है उनके जो राइट्स हैं उनके लिए वो वर्क करता है, स्टैंड करता है। आईएलओ इंक्रीजेस सोशल जस्टिस स्पेशली लेबर क्लास रश, रिकग्नाइजिंग ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, एंड वर्क टुगेदर, ये उतना मैटर नहीं करता जितना फर्स्ट वन करता है। कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, बिकॉज ऑफ जो लेबर क्लास बल्क है, रश है, वहीं पर प्रॉब्लम आता है गुड हेल्थ का, प्रॉब्लम होता है एजुकेशन का, प्रॉब्लम होता है डिफरेंट फैसिलिटीज का। दैट्स व्हाई आईएलओ आल्सो वर्क towards collective prosperity and peace, also provide financial assistance. What is the minimum global wage? What is minimum global wage? Same according to minimum wage, same in global form according to minimum wage for any individual country, just like India, Nepal, same in global form. That's called global minimum wage. The minimum wage refers to minimum amount that an employer must have pay his, that cannot reduce by collective agreement or individual contract. Therefore, global minimum wage refers to the minimum wage amount on a global level. In global form, ILO के अकॉर्डिंग जो ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट्स है इसमें ये सेट होता है इन ग्लोबल फॉर्म, जिसमें कि यूरोपियन कंट्री जस्ट लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पर वेज का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री। ये डिफरेंस आता है। इसके अकॉर्डिंग एक एवरेज ग्लोबल वेज रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है for any especially African country, any citizen, especially any Indian citizen, any Nepal or any Bhutan, any, ऐसा नहीं है कि आप you are from India that's why हम आपको इतना पे नहीं करेंगे, that's wrong। इसमें सिंगल वर्ड है, it refers the minimum amount, second line, that cannot be reduced by collective agreement or individual contract। You are Indian, you are African, that's why यूरोप में आपको उतना सैलरी पेड नहीं होगा, that's wrong। ऐसा नहीं हो सकता है। आईएलओ फोकस करता है, आईएलओ फोकस करता है उस चीज पे, ठीक है। Next, what is the India's minimum wage at present? What is the Indian minimum wage? India 178 rupees per day, 178 rupees per day, or 5340 rupees in per month. Global wage report 2022-2023. The topic related to our current affair, but this terms is also important for you. What are the minimum wage at present in India? 178 rupees, approximate $2 a day, $2 a day, or 5340 rupees in a month, $65. But what the difference between, what is the average minimum wage around the world? Just see what is the difference between Indian minimum wage and global form. This is interesting topic कि इंडिया का वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। देखिए एवरेज से देखते हैं, नॉट हाई से। द मिनिमम वेज ऑफ इंडिया 178 rupees per day and 5340, it means approximate $65. But at present average minimum around the world is minimum wage report 2022, according 2022, the Australia is $14.54,
$14.54, and in Luxembourg it is $13.67. डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, देखिए आपके सामने. The minimum wage around the world is calculated in a country-wise manner. For example, the highest is minimum wage for 2022 is Australia, $14.54 a day. I'm talking about a day. And for Luxembourg, it is 13.67 a day. ये एवरेज जो काउंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हैं, जिसमें कि इंडिया से और इन कंट्री से कितना डिफरेंट है. मोर देन $2 और $15, अप्रोक्सीमेट $2 और $15 या $14, अप्रोक्सीमेट $2 और $13. लग्जमबर्ग इज एक वेल सेटल्ड सिटी है लग्जमबर्ग. ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो द गुड प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली मिनिमम वेज रिपोर्ट 2022. ऑस्ट्रेलिया $14.54. क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा बनाना है. नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया जो T22 वर्ल्ड कप हुआ है, T22 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली इंडियन जितने भी हमारे दर्शक हैं और डिफरेंट पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज के इजिली जो है टूरिस्ट वीजा प्रोवाइड किया था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड कप T22. तो मिनिमम वेज, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल सेक्शन रिलेटेड टू GWR. GWR, जस्ट सी नेक्स्ट स्लाइड. UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Why UNESCO at present in the news? That the reason is UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. It means Mondial 2022 is convened by UNESCO 40 years after the first Mondial World Conference on Cultural Policies held in Mexico City in 1982. अब currently Mexico City 1982 में जाने के बजाय currently why at present UNESCO इस समय highlighted है. 2022 में जो भी हमारा इसका मीटिंग समिट हुआ, इस पे क्या इफेक्टेड, क्या फर्क आए. It mandate is to shape a more robust and resilient cultural sector fully anchored in the perspective of sustainable development as well as promotion of solidarity, peace and security. अपकमिंग स्लाइड में एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, सेम थ्योरी बेस पे रहेगा. एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर, सेम थ्योरी बेस पे रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट जो मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, दिस इज द थर्ड सच कॉन्फ्रेंस. लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो फर्स्ट वन था, थर्ड वन था और सेकंड वन था. इसको आपको फोकस करना है. इसके बेस के ऊपर अभी आपके सामने एक एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करूंगा. उसमें कॉन्फ्रेंस को लेकर के कुछ एडिट दे रखा है, ये स्लाइड आप रन कर सकते हैं, थोड़ा सा यूनेस्को से संबंधित. फर्स्ट जो हमारा मीटिंग हुआ, फर्स्ट वन जो मीटिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेशली कल्चर पॉलिसी के ऊपर, वो हेल्ड इन मैक्सिको. कब हुआ था? 1982 में हुआ था, मैटर नहीं करता है. And 24 years after 24 years, the UNESCO World Conference on Cultural Policy and Development held in Stockholm. First one is 1982, Mexico. After 24 years, Stockholm, Sweden in 1998. Now in 2022, this one is the conference number 3rd. Okay. तो यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये स्पेशली थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ है. 1982 फर्स्ट वन, 1998 सेकंड वन एंड 2022 थर्ड वन. क्वेश्चन आ जाएगा एट प्रेजेंट मॉनिकल 2022, मॉनिकल वर्ड इज इन न्यूज. व्हाई? तो उसमें आप देखेंगे दिस वन इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को, दिस वन इज द थर्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022. तो इट मैंडेट टू शेप टू रीबूस्ट एंड रिजल्ट कल्चर सेक्टर्स. डिफरेंट वर्क तो मेजर ही रहेंगे. वर्क बेसिस पर करंट अफेयर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा. करंट अफेयर क्वेश्चन स्पेशली जीएस से फैक्टेड हो सकता है, थोड़ा स्टैटिक से फैक्टेड हो सकता है. करंट की जो न्यूज है अगर मल्टी स्टेटमेंट बेस आ जाएंगे तो इस इंफॉर्मेशन से फैक्टेड हो सकता है करंट अफेयर. नेक्स्ट, सिर्फ सिंगल वर्ड इस कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वन 1982, 1999, थर्ड वन इज करेंटली 2022. इस इंफॉर्मेशन के लिए इस स्लाइड को मैंने सेट किया था और अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में नहीं था आपके लिए. अब हम देखते हैं, मेनली थोड़ा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा. हमने अभी आज की क्लास में देखा था
एक स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में, which month has been observed as the adaptation awareness month by Central Adaptation Resources Authority? This it means CARA. So which month? Please tell me which month? Anyone in this class? November. Who is this? What's your name? Harsh. Harsh, please tell me something about 2015 Juvenile Act. Remind any single line. 2015 Juvenile Act related to CARA. Sir, it governs the rules of adoption of child. Right, and barred for a male to adopt any girl, and Yes, sir. in 2015 CARA the being a statutory body in 2015 CARA. Three things in 2015. Okay, right. Next question. Next question in front of you. ये क्वेश्चन तो सबसे अलग है, इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाता हूँ। एक मैं सीधे एज इट इज पिक लेके आया हूं आपके सामने, जिसमें की क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल डू डांसर परफॉर्मिंग द पीलीवेशा फोक डांस ट्रेडिशनल ड्रेस अप एज। ये क्वेश्चन बहुत ही कह सकता हूं मैं, इस एड में भी देखा गया और कई बार पेपरों में भी देखा गया है, डिफरेंट एग्जाम में। इस क्वेश्चन के और सेक्शन से तो अभी हमारा क्वेश्चन देखा जा चुका है, बट जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उस पर हम फोकस करते हैं। स्पेशली ये तो केबीसी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे से रिलेटेड नहीं है, बट हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वर्ड कितना फेमस है। यू नो अबाउट पीलीवेशा। आप फोकस करिएगा, आप इस चीज को फोकस करिएगा, ऑडिट करिएगा। 2022 पीटी एग्जाम आप फोकस करिएगा, 2021 पीटी एग्जाम, 2020 पीटी एग्जाम, मैक्सिमम योर एग्जाम इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ वर्ड। कह सकते हैं ग्लॉसरी बेस, ग्लॉसरी बेस जो हमारा पेपर है, मैक्सिमम 16 to 70 क्वेश्चन इस तरह से बेस्ड होते हैं, सिंगल वर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दैट्स व्हाई इस तरह के वर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। Do you know about Pilivesha? What is Pilivesha? Is a folk dance traditionally dressed up as. Traditionally dressed up as. चलिए इसमें से एक बार आप अपनी किस्मत आजमाइए, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए बताइए। टाइगर। टाइगर इज द राइट आंसर। टाइगर इज द राइट आंसर। देखिएगा, व्हाट इज व्हाई दिस फेस्टिवल इन न्यूज। करेंटली ये फेस्टिवल, हमारा जो करंट अफेयर का टारगेट है, दिस क्लास विल कवर प्रीवियस 6 month major topic which is related to your PT exam, especially from September, October, November, December, January, February. So in October 2nd, Pilivesha festival, especially ये इस टाइप का एमसीक्यू आपके लिए मैंने मैनेज किया था। Pilivesha, which was in news recently, is a. Which was in news recently is a. हमने पीछे केबीसी के पीछे देखा, दिस इज अ टाइप ऑफ फोक डांस। तो फोक डांस कॉमन है, इट मींस म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है। दिस वन इज अ फोक डांस। पीछे केबीसी में आपने आंसर दिया, यस इट्स रिलेटेड टू टाइगर। यस, एक टाइगर के गेटअप में जो लोकल वहां के पर्सन होते हैं वो फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। दिस वन इज द फोक डांस, बट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कोस्टल कर्नाटका। गिव मी द राइट आंसर। कर्नाटक। बिल्कुल, पर्सनालिटी से अगर आप देखेंगे ये कल्चर इस दिस टाइप का जो है, ये कर्नाटक से टच में हो रहा है। फोक डांस ऑफ कोस्टल कर्नाटका, ये स्पेशली अभी 2 अक्टूबर को भी ये किया गया था, फोक डांस पीलीवेशा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। पीलीवेशा स्पेशली is performed during the Navratri to honor of the goddess Durga, whose favored animal in the tiger. The दुर्गा जी का जो सवारी है वो टाइगर है। That's why जो फेवर्ड एनिमल टाइगर है उसी के गेटअप में ये नवरात्रि के ड्यूरेशन में, स्पेशली कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका में डिफरेंट विलेजेस में काफी धूमधाम से मनाते हैं इस फेस्टिवल को, कोस्टल कर्नाटका के नियर बाई, जिसे हम लोग कहते हैं पीलीवेशा। जस्ट लाइक अ फोक डांस ऑफ साउदर्न इंडिया।
और इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिस टाइप ऑफ ग्लॉसरी बेस्ड वर्ड जो करंट अफेयर में एक्टिव है न्यूज में, इस पर आपको फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना है। जस्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने? why chlorophyrifos, chlorinated paraffin, dechlorane plus are in news recently? Why? Give me the right answer. ये this one is a Stockholm Convention. ये Stockholm Convention है, आपके सामने मीटिंग है नीचे. According to you, which one is the right answer? These are the chemical used in biochemical weapons. Weapons का नाम आज मैंने पूरी क्लास में डिस्कस किया नहीं किया. These are chemical used to treat sewage water. These are the listed as persistence organic pollutant by the review committee. None of these. According to you, which one is the right answer? मैंने completely class. Yes. C. C is the right answer. These are the listed as POPRC in the 18th summit of Stockholm Convention, listed for review regarding इसको बैन करना है कि नहीं करना है, स्पेशली दो डेक्लोरिन प्लस के रिगार्डिंग और UV235 इसके रिगार्डिंग इसको बैन करना चाहिए. और इंडिया ने अपोज किया है बिकॉज इंडिया एंड चाइना मैक्सिमम इनका यूज करता है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन पेस्टिसाइड्स, इन रबर और डिफरेंट सेक्टर. दैट्स व्हाई इंडिया ने अपोज किया है इस बैन को लेकर के. इंडिया के सामने प्रॉब्लम है, बट इस कन्वेंशन में डिसीजन दिया गया है टू सब्सटेंसेस को फुली बैन करने के लिए, जिसमें कि फर्स्ट वन इज डेक्लोरिन प्लस. प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन हो चुका है. राइट आंसर इज सी. दीज आर लिस्टेड एज अ पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बाय द रिव्यू कमिटी. Dear candidate, please tell me how many member in this committee, POPRC, total number of member? 31. 31. Have any idea of regional basis, just like Africa, Latin America? Have any idea? 8 from 7 from. Have any idea? 8 from Africa. 8 from Africa. Okay. Asia Pacific 8. Okay. Asian Pacific. 8 from Asian Pacific. 8 from. 7 from. I think 7 from Latin America. Western Europe. Western Europe. Right. Okay. ठीक है, इतना माइंड में सेट हुआ है, बहुत बेहतर है, परफेक्ट है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड. ये प्रोटेस्ट भी हुआ था, इसको बैन के रिगार्डिंग यूरोप में. ये पिक्चर मैंने आपके सामने शो किया बिकॉज ऑफ वी हैव टू राइट टू ब्रीथ द क्लीन एयर. बैन क्लोरोफाइरोफोस. इट हार्म्स टू किड्स ब्रेन्स. तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे यूरोप में. इसका इंडिया को तो लॉस मिलेगा ही मिलेगा. इंडिया को काफी यूज करते हैं डिफरेंट सेक्शन में इस चीज का. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सेम रिलेटेड टू सेम वर्ड. ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने करंट अफेयर्स के टेस्ट से नहीं, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली जीए के टेस्ट से लिया है. Same word. With respect to the chlorophyrifos, consider the following statement. It is a flame retardant. It was registered under the Insecticides Act of 1968. It is one of the 10 pesticides banned by Punjab and Haryana governments in August 2022. According to you, which one of the following statement is correct? Just see. Only one. Only one is correct. जस्ट सी नेक्स्ट स्लाइड. स्पेशली ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन बेस क्यों दिया था. मैक्सिमम हमारे स्टैटिक बेस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं, बट इट आल्सो इफेक्टेड. स्पेशली कोई भी वर्ड ऐसा होगा जो अपने पास बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठ रहा होगा, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है. तो इसमें मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर किया आपको. आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे. पहले हम इन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो क्लोरोफाइरोस के लेकर के है. विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली रिलीज यूनिसेफ रिपोर्ट टू चाइल्ड मैरिज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गिव मी द राइट आंसर.
According to you, give me the right answer. Fast. Sir, D. Neither one nor two. Incidence of child marriage was the highest in Southeast Asia. The global target is to eliminate child marriage practices by 2040. 2040? Is this 2040? This is 2030. This is 2030. So second one is wrong. It means third one is wrong. First और fourth में आप check करिए. Incidences of child marriage was the highest in Southeast Asia. In Southeast Asia, especially Southeast Asia, India, Nepal, and different Asian countries. आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं वेस्ट अफ्रीका के रिगार्डिंग, वेस्ट अफ्रीका, बट इन द ग्लोबल फ्रॉम अलास्का टू जापान, ये जो कंट्री है कम्स अंडर साउथ ईस्ट एशिया. और इस कंट्रीज में मैक्सिमम कंट्रीज हमारे ऐसे भी हैं जो इंडिया, नेपाल और इन बांग्लादेश, ये स्पेशली कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कवर होते हैं. और दैट्स व्हाई यहाँ पर आंसर हमारा ए करेक्ट बनेगा. ए हमारा करेक्ट बनेगा, बी गलत है बिकॉज ऑफ 2040 2030. ए यहां पर करेक्ट रहेगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द राइट आंसर विद रेफरेंस. रीड करिए और राइट आंसर बताइए. रीड करिए और राइट आंसर बताइए फास्ट. अकॉर्डिंग टू यू विच वन द राइट आंसर? ए. Just see. Just a minute. Its mandate is to shape. No, this is the second such conference after the first Manicured World Conference on Cultural Policies held in Mexico City 1982. Okay, first one is 1982. Second one, in which year? After 24. After 24. 1998. Right. And third one is this 2022. So that's why second is wrong. That's why right answer is A. Right answer is A. Okay. Good. Just see next slide. This is the information. The United Nations Environment Program proposed to list chlorofluorofos as POP was registered by India. इंडिया को तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा इस चीज से. इंडिया को प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा. Just see, India had also opposed the decision to list flame retardant dechlorine plus. Why? Because of India and China, especially according to under the Insecticide Act 1968, since 1977, as per Anupam Verma Committee recommended its review for continued use in 2015. But so many committees, Anupam Verma आ जाए, कितने भी आ जाए, कंट्री की नीड्स को फोकस किया जाता है. नीड्स को देखा जाए तो एज पर आर्टिकल 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोहिबिटेड द थिंग्स विच यूज्ड, जिसमें कि हमारा टॉक्सिन जस्ट लाइक अल्कोहल वगैरह यूज होके बनता है. बट गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड यू लाइसेंस फॉर लिकर शॉप. प्रैक्टिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड लाइसेंस फॉर लिकर शॉप. सो आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 डजंट मैटर. कंट्री का नीड प्रायोरिटी रहता है. अनिल वर्मा कमेटी रिकमेंडेड टू रिव्यू फॉर कंटिन्यूड यूज इन 2015. इन्होंने ये रिकमेंड किया कि ओके आप कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उतना. चाइना एंड इंडिया अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्लोरोफायरोफोस. चाइना एंड इंडिया. दैट्स व्हाई India opposed the decision to list the flame retardant like dechlorine plus or secondary matter or 7 matter also. Nearly 48% of chlorofluorofos of 24,000 tons was produced in India. केवल इंडिया में 24,000 टन्स के आसपास होता है. Globally, some 50,000 tons of chlorofluorofos is being used annually, according to estimated by the China Crop Production Industries Association. ये एस्टिमेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? चाइना क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन, CCPIA. 24,000 टन्स इन ग्लोबल फॉर्म, सच एज ग्लोबल फॉर्म 50,000 टन्स में 24,000 टन्स ओनली इन इंडिया ही इसको क्या होता है
प्रोड्यूस होता है. क्लोरोफायरफोस वाज अप्रूव्ड फॉर एग्रीकल्चरल यूज्ड इन 2021 which includes its use as a pesticides against pest affected Bengal gram, rice and cotton. तो अब हम फूड ग्रेन्स को सिक्योर करें, इसको यूज करें जस्ट लाइक अ पेस्टिसाइड्स, और हम स्टॉकहोम कन्वेंशन को फॉलो करें, तो डिलेमा की कंडीशन में एज प्रेजेंट गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि दैट्स रॉन्ग, हम इसको अपोज करेंगे, दैट्स टोटली रॉन्ग. WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी 1 और 2 एग्रीमेंट है, इंडिया ने साइन करने से डिनाई कर दिया बिकॉज ऑफ इंडिया का डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रहा था उससे. एंड ड्यूटी स्क्रिप्ट अपकमिंग टॉपिक आप पढ़ेंगे. ड्यूटी स्क्रिप्ट इज द परफेक्ट एग्जांपल कि WTO के एग्रीमेंट को इंडिया ने डिनाई किया है. तो सेम चीज है, इंडिया ने डिनाई किया कि भाई अपोज किया, दैट्स रॉन्ग, इसको आप बैन मत करिए. हमारा मेनली जो पेस्टिसाइड्स है अगेंस्ट पेस्ट इफेक्टेड बंगाल ग्राम, राइस और कॉटन, हमें एग्रीकल्चर सेक्शन में अच्छा यूज होना पड़ता है इसका. इट इज वन ऑफ द 10 पेस्टिसाइड्स बैन, one of the 10 pesticides ban, especially where by Punjab and Haryana government in August 2022. Punjab and Haryana are the major state of food grain, especially wheat, production of wheat. Punjab and Haryana कहते हैं भारत के अन्न की टोकरी, पंजाब एंड हरियाणा. One of the 10 pesticides banned by Punjab and Haryana government in August 2022, chlorofirifos is approved by 18 crops in India. For approved 18 crops in India, while it was being used for 23 crops. इसको केवल और केवल 18 क्रॉप्स के लिए अप्रूव किया गया, बट 23 क्रॉप्स में इसको यूज किया जा रहा है, 23 क्रॉप्स के लिए यूज किया जा रहा है. तो ये भी कहीं ना कहीं पर गलत है. बट अकॉर्डिंग फॉर हेल्थ, आपने देखा पीछे प्रोटेस्ट यूजसी प्रोटेस्ट किड्स ब्रेन के लिए हार्मफुल है, ऐसे फूड ग्रेन्स जिसमें इनका सबका एज ए पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पर आगे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसको बैन करने की कोशिश किया गया था. तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट वन ऑफ द 10 पेस्टिसाइड्स बैन इन हरियाणा गवर्नमेंट. एक बार प्रीवियस स्लाइड में आ जाइए और आप क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन में ये बात स्पेशली बोला गया कि it is one of the 10 pesticides banned by Punjab and Haryana government in August 22. This statement is right. This is totally right. ये statement सही है. It is a flame retardant. It was registered under the Insecticide Act of 1968. तो इसमें हमारा थर्ड वन ठीक है. It means हमारा फर्स्ट तो किसी कीमत पे नहीं बनेगा, फर्स्ट किसी कीमत पे नहीं बनेगा. नेक्स्ट, इसी तरह से इंफॉर्मेशन, जब भी आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन करें, कोशिश करें कि करंट अफेयर टॉपिक को, करंट अफेयर इज फुली कवर्ड बाय जनरल अवेयरनेस, तो नियर बाय इंफॉर्मेशन ऑफ करंट अफेयर टॉपिक को भी प्रिपेयर करें. बिकॉज ऑफ आप करंट अफेयर के टॉपिक में सेम क्वेश्चन ये आपके सामने है, आपने पढ़ा, अभी आपने इसको क्वेश्चन को किया एज ए करंट अफेयर न्यूज रिसेंटली, बट सेम वर्ड पे हमने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रेडी हो रखा है, कि जो कहीं ना कहीं पर करंट अफेयर से ही उठ करके यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट, अगर हम देखें सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वर्ड, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, सर्च करना है, आपको देखना है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगी. ये ऐसी इंफॉर्मेशन को फोकस करेंगे, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है. तो आज हमने डिस्कशन किया इन सारी चीजों पर. एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एनी क्वेश्चन, क्वेरी, कोई भी डिस्कस कर सकता है, प्लीज एनीवन. आज के जो हमारे टॉपिक थे वो थ्योरी बेस्ड थे, स्पेशली मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने के रिगार्डिंग थे. कोई क्वेश्चन क्वेरी है, आप डिस्कशन कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, फास्ट. एनीवन regarding your current affair problem, regarding any preparation, regarding your strategy, any question? Sir, Yes. sir, in Juvenile Justice Act, you have said that in 2006 it was legitimate parent, and in 2015 it was lawful parent. What exactly is the difference between both these terminologies? 2015 or compared with Difference between legitimate parent and lawful parent.
lawful, especially lawful parents means as per current condition of the rulings of any country, just like any rulings of Supreme Court, rulings which already work as a law. Any advocate, कोई आपकी फैमिली में एडवोकेट है नियर बाई और रिलेशन में? एनीवन इन योर फैमिली एडवोकेट? एनी सिंगल पर्सन इन योर फैमिली? Yes or no? No, sir. Especially the word ruling. एक वर्ड आता है इन लॉ में, rulings. Totally advocate profession is based on ruling. आप बोलेंगे सर हाउ कैन इट पॉसिबल? किसी भी फाइनल डिस्कशन में, एनी फाइनल डिसीजन में, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट, एनी सुप्रीम कोर्ट गिवन एनी डिसीजन, then वो डिसीजन जो होगा वर्क एज ए रूलिंग इन डिफरेंट केसेस. फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट टेक अ डिसीजन दैट द एजुकेशन सेक्टर is banned to use digital board. एजुकेशन सेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में बैन कर दिया, बैन टू यूज डिजिटल बोर्ड. देन हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लिया आफ्टर दिस डिसीजन हम कंटिन्यू डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं. Then any student or any public or any other citizen इस behalf पर केस करता है कि that institute use the digital board, but ये जो है इग्नोर कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं इस डिसीजन ऑफ रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट. दैट्स व्हाई such person is lawful person has rights as per previous ruling, has rights to make issue in form of rates कि डिजिटल बोर्ड को बैन है तो आपको भी बैन रखना पड़ेगा. लॉफुल राइट्स पे बैकअप रहता है. लॉफुल पर्सन इज फुल्ली बैक्ड बाय डिफरेंट रूलिंग, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट राइट्स. Just like you have a right according to Indian Penal Code IPC section 103, you have a rights on your property rights. अब आप बोलेंगे सर बट एट पर कॉन्स्टिट्यूशन 44th amendment the right of property is transferred in form of fundamental right to legal right, 44th amendment of Indian Constitution. but आप एक बार देखें IPC 103 प्रोवाइड करता है आपको राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ थेफ्ट और इन केस ऑफ एनी, आपको लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपके साथ घटना हो रहा है, आपका कार आपसे छीन रहे हैं, इन दैट केस वहां पर आईपीसी सेक्शन 103 आपको ये राइट प्रोवाइड करता है कि आप उसको इंजर्ड कर सकते हैं, आप उसको हिट कर सकते हैं, और ये राइट लॉफुल राइट में आता है. सेम थिंग दिस राइट यूज टर्मिनोलॉजी in lawful parents because of sometime just जो justice है, the word judge, in case of judge, sometime judge इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि in favor of child growth, in favor of child welfare, जज ऑब्जर्व करते हैं कि this is wrong at present इस child का, such child का, इस parents के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ रहना ये ओके नहीं, ठीक नहीं है, समथिंग रॉन्ग. तो वहां पर कुछ जो लॉफुल पेरेंट्स के जो हमारे राइट्स थे, लॉफुल के वहां पर कुछ चेंजेस की कोशिश की गई 2015 में. और इसमें कहीं ना कहीं पर सबसे मेन डिसीजन क्या लिया गया पेरेंट्स के केस में, नेक्स्ट स्टेप, कि मेल को गर्ल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. जो गर्ल चाइल्ड है उसको एट एनी कॉस्ट मेल को प्रोवाइड नहीं करेंगे, एट एनी कॉस्ट नहीं किया जाएगा. कि एक जज का थिंकिंग है कि फीमेल मदर उसका एक बेटर तरीके से उसको रख सकती है, उसका ग्रोथ कर सकती है, उसके लिए फेवर में रह सकती है. तो ये लॉफुल वर्ड जो यूज होता है स्पेशली बैकअप प्रोवाइड करता है किसी भी एक्ट का, किसी भी रूलिंग्स का, दिस थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज टर्मिनोलॉजी लेजिटिमेट पेरेंट्स, स्पेशली with responsible just like मेरे जो है जो एल्डर ब्रदर है वो दुनिया में नहीं है, उनका डेथ हो रखा है, बट जो नेफ्यू वगैरह, आई एम रिस्पॉन्सिबल एज ए सोशल ड्यूटी कह सकते हैं, एज ए ड्यूटी ऑफ रिलेशन कह सकते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल. और
फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशंस और एनी कोर्ट इफ गाइडेड मी, मुझे ये अलाउ करती है कि आप उसको देखें। फॉर एग्जाम्पल सो मैनी ओल्ड मूवी, आपने स्टोरी देखा होगा कि एक बहुत रिच एक्ट्रेस होती है और उसके ऊपर एक विलन होता है जो उसको एज ए गार्जियन उसके लिए गोल्ड फिक्स करता है कि जब तक ये +18 नहीं होता आप इसकी प्रॉपर्टी को रोटेट करेंगे और देखेंगे, आफ्टर दैट जो है चेंज है। तो ऐसे केसेस में भी मैक्सिमम जब फॉल्ट देखने को मिले हमें 2016 में, तो वहां पर सिंगल पेरेंट्स एडॉप्टेशन को क्या किया गया और एक्सटेंड किया गया। सिंगल पेरेंट्स एडॉप्टेशन को इसलिए एक्सटेंड किया गया क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इंडिया के अंदर भी ये सीन हुआ कि यस देयर इज अ मेजर फॉल्ट यूजिंग दोस टाइप्स ऑफ राइट्स इन केस ऑफ लॉफुल, इन केस ऑफ लेजिटिमेट केस। यहाँ पर जब केस को क्राइम से कंपेयर किया गया तो चेंजेस लाए गए 2016 में और 15 में, और उसी की नेक्स्ट लाइन में चेंजेस मेंशन भी हैं। चेंजेस तो मेजर फॉर्म में लाए गए बट जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो आपके सामने मेंशन। नेक्स्ट थिंग, स्पेशली सो मैनी इन केस ऑफ एक्ट, प्लीज कभी भी आप एक्ट को डिस्कशन करें तो उसमें प्रैक्टिकल केसेस को टच में लेके करें। एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, एवरी कॉन्सेप्ट practical concept, just like you know about the Nirbhaya case, you know Nirbhaya case in Delhi, Nirbhaya case, so you know about Arushi Talwar case. So Arushi Talwar case parents is also doubtful, parents भी doubtful थे उसमें, both guardian especially। तो आरुषि तलवार केस में पेरेंट्स डाउटफुल थे, तो ढेर सारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेशन होते हैं जो वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, वो इसके रिगार्डिंग फोकस करते हैं कि कौन से सफिशिएंट चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं इस समय ऐसी कंडीशन में। बिकॉज ऑफ एट दैट टाइम क्या आरुषि का सीन था, क्या निर्भया का सीन था, देयर इज द फर्स्ट चेंज ऑफ एज ऑफ द सिंगल एक्यूज्ड एज, टॉकिंग अबाउट कि वो बालिग है कि नहीं है। तो 16 इयर्स, 18 से 16 एज किया गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग, ये बहुत जरूरी रहता है। और ऐसे ही 1956, 2000, 2006, 15, 17 में रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं एडॉप्टेशन लॉ में। ये फैसिलिटेशन को बढ़ाने की कोशिश है उस चाइल्ड के रिगार्डिंग देखते हुए। नेक्स्ट वन, एनी क्वेश्चन? यूपीएससी सीएससी में करंट अफेयर को फोकस करने के साथ, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर, जब भी आप उसको प्रिपेयरिंग पे पूरी लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं तो नियर बाई कंटेंट को जरूर फोकस करें। वो स्टेटमेंट पे आपको प्रोवाइड देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट पे वो सेट हो रखा है, दैट्स व्हाई। और एनी क्वेश्चन क्वेरी? फ्रॉम यूनिसेफ एंड यूएनपीएफ as from SDG, any question about 17 target SDG? From global wage report related to minimum or real wage or finding of global wage report? Any question from this one is the statics portion. UNESCO World Conference, Cultural Policy and Sustainable Development. Okay. Thank you all of you. नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और इम्पोर्टेंट थिंग्स पर जो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और एनी क्वेश्चन क्वेरी डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं। मैवरिक, आयुष, चरण, एबर, हर्ष, आयुष, चरण, if you have any question query, otherwise No, sir. the class is over. No, sir. Okay. No, sir. Okay, otherwise the class is over. Any question query regarding your preparation of current affair? First of all, previous 6 month जो मेजर टॉपिक है उसको ग्रिप करें और
कंटिन्यू करें मेरे साथ इस क्लास को, धीरे धीरे एक आइडिया जनरेट होगा कि विच टॉपिक और कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर अपकमिंग पीटी एग्जाम एंड विच टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट मीन्स आपको इतना सारा किताब नहीं इकट्ठा करना है। 2 आवर बेस ये क्लास है आपका, जिसमें मैक्सिमम 5-6 टॉपिक पे डिस्कशन होगा। और ये मेरा कमिटमेंट है, बिफोर योर एग्जाम एवरी सैटरडे 4-4-4 अप्रोक्सीमेट 15 to 16 में भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाए करंट अफेयर की, और 90% चांस है वो क्लास आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसके ही अंदर से आप क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे। ये पूरी कोशिश है, हम सारा नहीं, हम सटीक, हम एक्यूरेसी को ग्रिप करते हैं। एक्यूरेसी को ग्रिप करने से क्या रहता है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता उतना। दैट्स वाई। ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।